हम लोगों ने पहले ही गैप के बारे में डिस्कशन किया. व्हाट इज द गैप? गैप के बारे में हमने डिस्कशन किया ना कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है. इट इज अ बेसिक अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट व्हिच इज डिफाइंड set of rules for the companies to be followed while maintaining their books of accounts. Fine. We all know about GAAP. और ये जो गैप है, दिस इज कंट्री स्पेसिफिक. हर कंट्री का अपना अपना गैप होता है. Now, generally accepted accounting principles are usually developed by professional accounting bodies like the American Institute of Certified Public Accountants and Institute of Chartered Accountants of India. In developing such principles, however, the accounting profession has to reflect the realities of social, economic, legal and political environment in which it operates. देखो, ये जो है जितना भी गैप है या जो नियम है, स्टैंडर्ड बेसिकली, ये स्टैंडर्ड किसने डिफाइन किए? कौन? इसके जो बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी, दैट इज AICPA एंड ICAI इन इंडिया. इन लोग इस रेगुलेशंस को या स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस को तैयार करते हैं. फाइन. लेकिन ये जो गाइडलाइंस तैयार होते हैं कि इस बेसिस में एक कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है, तो इस चीज के लिए क्या होता है, यू हैव टू कंसिडर, मतलब जो बॉडीज हैं, जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं, रेगुलेटरी बॉडीज who are there in preparing this set of rules and regulation, they have to actually look into the realities, current, वो जो ग्राउंड रियलिटीज की बात करते हैं, जिसमें हम अपने सोशल सिनेरियो को, इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल एनवायरमेंट है, इस चीजों को हमें कंसिडर करने की जरूरत. Besides academic research, regulatory and tax laws of the government, example Companies Act 1956, Income Tax Act 1961, etc., in a large measure influence the formulation of acceptable accounting principles. देखो, academic research तो होनी है. Once the professional bodies are there to set the guidelines, they have to actually consider the pest analysis, जिसको हम लोग legal term में pest analysis बोलते हैं, that is political, economic, social and technological. मतलब आपको समाज को समझना, इस सोसाइटी में क्या चल रहा है. देखिए, हमारा जो थियोरिटिकल बैकग्राउंड है, ये जो हम अपने अकाउंटिंग बनाएंगे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाएंगे, किसके लिए बनाते हैं? सिंपली टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द कंसर्न्ड यूजर ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. जो कंसर्न्ड यूजर है, उनको मैसेज कन्वे करने के लिए, दैट माय कंपनी इज रनिंग इन दिस मैनर, दैट वी आर यूटिलाइजिंग द मनी इन दिस मैनर. मैंने मार्केट से, ओपन मार्केट ऑपरेशन द्वारा पैसे कलेक्ट किए हैं, मैंने कैपिटल मार्केट से रेज किया है. That is why I am accountable for the public. I am accountable towards the public. Now, since I am using the money, using the capital of the public, I am responsible to them. I am answerable to them. तो इसी वजह से ये जो आंसर मैं दूंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द्वारा देते हैं, तो ये एकदम रियलिटी, जो प्रैक्टिकल है, सोसाइटी किस तरीके से चल रही है, हाउ डू इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट देयर रिपोर्ट्स टू बी, वो किस तरीके से डिसीजन लेंगे, ये सारी चीजें देखनी है ना. इसी वजह से कोई भी गाइडलाइन जब बनती है ना, तो जो ये पेस्ट एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके पहले. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो अदर जितने भी लॉज हैं, जो रेगुलेटरी लॉज हैं, लाइक कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, दिस इज अ लार्ज मेजर, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है. इन्फ्लुएंस द फॉर्मुलेशन ऑफ एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. Stock exchanges and other regulatory agencies like CCI have laid down rules for disclosure and extent of accounting information. देखो, स्टॉक जो मतलब हमारे जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं और वो जो CCI है, दैट इज कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, हमें पता है ROC रजिस्ट्रेशन देखती है कंपनी का, बट CCI देखती है हमारे कैपिटल इश्यूज मैटर्स को, कि हम लोग मार्केट में किस तरीके से शेयर्स इशू कर रहे हैं और कैपिटल रेज कर रहे हैं. तो इसके जो कंपनी, जो पब्लिक कंपनी है, उनके लिए जो डिस्क्लोजर है वो थोड़ा ज्यादा होते हैं, डिस्क्लोजर नॉर्म्स थोड़े ज्यादा होते हैं, उनके अपने स्पेसिफिक अकाउंटिंग फॉर्मेट होते हैं. ठीक है. Since the environment in which businesses operate undergoes constant changes as a result of changes in economic and financial policies of the government and changes in the structure of business, continued evaluation of the relevance of generally accepted accounting principles is required. In this sense, the principles of accounting are not everlasting truth. You will appreciate that it is development of relevant accounting principles in tune with the present day needs of the society that will make it possible for the business enterprise to
to develop financial statement which would be acceptable and of value to the end user. Simple सी बात है, ये जो हमारा environment है, environment is changing constantly, the business environment in which we are actually operating, the social environment, everything is changing constantly. Since there's a financial and economic pressure, there are lots of changes, structure is being evaluated, lots of revaluation and re-engineering is done. हर समय आप देखो गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ मैक्रो पॉलिसीज चेंज हो रही है, नई नई चीजें आ रही है, तो नो डाउट ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है वो भी कोई एक फिक्स पैटर्न में नहीं हो सकता. दिस हैज टू बी अपडेटेड एज पर द रिक्वायरमेंट. सोसाइटी में किस तरीके से डिमांड आ रही है, किस तरीके से लोग डिसीजन ले रहे हैं. देखो अल्टीमेटली द फैक्ट इज व्हाई डू वी नीड द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? सिंपली फॉर मेकिंग अ साउंड डिसीजन. For making a sound decision, what is the current scenario? What is the requisite information you require? This changes from time to time. Society may changes, and according to that, everything, the laws, the rules, and the regulations, regulatory guidelines also are updated accordingly. ठीक है? Is this clear? ये वाला pattern clear है? हाँ clear है. यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट नोट जैसा क्वेश्चन आ सकता है for 4 to 5 कि discuss on the changing nature of GAAP. तो जब भी आप लिखते हो तो सबसे पहले you start with the definition of GAAP कि what is GAAP, and then who are the regulatory bodies who are there, then you will discuss about this fact. First आपको GAAP को define करना है, then you have to discuss on this. और जब भी आप short note या whatever answers you are writing, start to be very specific. First point out 2 to 3 points, bullet points. पहले आप bullet point mention करो. Introduction, that is the definition. Then you mention the bullet points कि इस चीज को लेकर हम discussion कर रहे हैं. और even you can just write it down that the main specific points or the main keywords in this regards or in regards to GAAP would be this. जैसे Companies Act, influence of Companies Act, influence of the statutory bodies, influence of AICPA and the social and pest analysis. उसके बाद you define और discuss in very short brief. तो इस तरीके से आंसर फ्रेम करोगे तो आराम से मीन स्पेसिफिक पॉइंट जो है वो एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि यू नो अबाउट इट, क्योंकि पूरा डिटेल्स जो डिस्कशन है वो पूरा बेस होता है आपका पॉइंट के ऊपर. तो फोकस ऑन द मेन पॉइंट और द सेंट्रल पॉइंट ऑफ डिस्कशन, तो उसको हमेशा हमें पहले लिखना चाहिए. ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन के बाद. नाउ अटेम्प्ट्स टुवर्ड्स स्टैंडर्डाइजेशन. Now once we are going towards standardization, as I told कि जो गैप है this is country specific. Now हर country specific हो गया, इसका मतलब एक कंपनी जो डोमेस्टिक लेवल पे ऑपरेट कर रही है, जो सिर्फ बीएससी या एनएससी पे मतलब जिनकी लिस्टिंग है, that is fine to compare with that company. मैं अगर एज एन इन्वेस्टर मैं नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करती हूँ, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, मैं आईटीसी और टाटा पावर के कंपनी के शेयर्स को कंपैरिजन करती हूँ. ठीक है, सो वो स्पेसिफिक है, कंट्री स्पेसिफिक है. हमारे इंडिया में ही वो कंपनीज हैं, इंडियन कंपनी है, डोमेस्टिक है, एंड उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दैट इज आल्सो प्रिपेयर्ड विद गैप. इट इज इजीली मेजरेबल. मेरे लिए बहुत आसान है उनको मेजर करना क्योंकि मैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर हूँ. बट व्हाट अबाउट इन केस ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट? जब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं ना, तो मेरी कोई कंपनी जापान की है, कोई कंपनी यूएसए की है, देन इन दैट time, at that time what will I do? I have to compare a Japanese company with that of a European company, or let's say a Japanese company with that of a Chinese company. कोई भी कंपनी को लेकर हम कंपैरिजन करेंगे तो there has to be a standard which is at par with the international norm. तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसपे हम कंपेयर कर सकें in the international market. So this is coming standardization in UK and USA. Though the Institute of Chartered Accountants in England and Wales began making recommendations since 1942, the real progress started with the establishment of Accounting Statement Committee by the Institute in 1969 in the wake of public criticism of financial reporting methods, which permitted diverse practices. As a result of diversity in practices, some big investors had suffered heavy losses on their investment in well-known companies. The main objective of ASC, that is your Accounting Statement Committee, has been to narrow areas of difference and variety in accounting practices. So ASC का first of all ASC थी, Institute of Chartered Accountants of England and Wales ने ये पहले से recommendation किया since 1942.
बट 1969 में एएससी का एक बॉडी, एक्चुअल में डिफाइंड बॉडी जो वो सेटअप हुआ। एएससी का मेन ऑब्जेक्ट था कि जो डिविएशंस है इन द वे ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको कम किया जाए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एएससी has been to narrow areas of difference and variety in accounting practice. The procedures used for standardization is initiated by the issue of an exposure draft on a specific topic for discussion by accountants and the public at large. Comments made on exposure draft are taken into consideration when drawing up a formal statement of the accounting method for dealing with that specific topic. This statement is known as Statement of Standard Accounting Practices. So this was the initial draft. एकदम जो ASC का गठन हुआ था, मतलब ASC ने फॉर्म किया था बॉडी, ASC body was formed and after that they prepare a first draft. तो first draft जो था वो इस चीज को लेकर था, comment the first initial statement was regarding statement of standard accounting practices. हमारा मेन कंसर्न क्या है कि जो कंट्री स्पेसिफिक है उस तरफ से हमें मूव करना है टुवर्ड्स अ more standard format, एक more we get a more standardized procedure of doing accounting. Once the statement of standard accounting practice is adopted by the accounting profession, the fact that the statement has been issued by the institute in itself signifies the acceptance by the profession. Any material departure by any company from the standard practice in presenting its financial report is to be disclosed in that report. So far, 19 statements of standard accounting practices, in addition to some exposure draft under consideration, have been issued by the ASC. तो ये क्या बता रहे हैं? ASC एक गाइडलाइन देती है या आप एक स्टेटमेंट बता सकते हैं हम लोग जिसको बोल रहे हैं the statement is known as statement of standard accounting practice. ठीक है, ये जो स्टेटमेंट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस क्या है, ये जैसे हमारे यहाँ पर एक गाइडलाइंस में होता है सीए कोड ये या अकाउंटिंग कोड ये, तो हर कोड का अपना अपना डिफाइंड गाइडलाइन होता है। जैसे क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं, आईएसओ 9001 अगर आपके सर्टिफाइड है तो आपके गाइडलाइंस या प्रोसेस ऐसे होगी। तो सेम वे में ये जो स्टेटमेंट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस है वो अभी तक 19 ऐसे ड्राफ्ट इशू कर चुके। तो एक कंपनी जो भी स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रही है उसको वो स्पेसिफिक नियम को मानना है और अगर कोई डेविएशन है तो उसको ही नोट में मेंशन करना है। ठीक है, the need for evolving standards in the USA was felt with the establishment of Securities Exchange Commission in 1933. ये जो स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत यूएसए ने कब फेल? In the year 1933 with the establishment of Securities Exchange Commission. पहले हमारे यहाँ पे भी Securities Exchange Commission हुआ करता था. The SEC is the government agency to regulate and control the issuance and dealings with securities of the compliant. अभी जैसे SEBI है, Securities Exchange Board of India. A research-oriented organization called the Accounting Principles Board was formed in 1957 to spell out the fundamental accounting postulates. This is actually the history. ये history के बारे में discussion कर रहे हैं कि यूएसए में पहले तो एक जरूरत पड़ी होगी ना कि क्यों मतलब हमारे जो एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग एक स्टैंडर्ड पॉलिसी की जरूरत क्यों है। तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन आया, उन्होंने जो ये डील करता था कि आफ्टर किस तरीके से सिक्योरिटीज इश्यू होंगी, उसकी डीलिंग्स कैसे होनी है। रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद फॉर्मेशन हुआ, दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड was formed in 1957 to spell out the fundamental accounting postulates. तो डिटेल्स बताएगा कि ये फंडामेंटल है। The Financial Accounting Standard Board was formed in 1973. ये जो Financial Accounting Standard Board है, ठीक है, this was formed in 1973. देखो 1933, 57, then 73. The FASB pronounces statement from time to time articulating the generally accepted accounting principles. The constant support given by SEC to FASB pronouncements has given considerable credibility to its accounting policy statement. The FASB till 1985 has issued 5 statements of concept and 88 statements of financial accounting statement. देखो ये FASB के बारे में बोल रहा है, that is your Financial Accounting Standard Board. तो Financial Accounting Standard Board के बारे में बता रहे हैं कि 1985 के बारे में। इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि अभी का ये मतलब ये तो 1985 की बात कर रहा है, तो एज ऑफ नाउ कितने चेंजेस हुए हैं उसको भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं।
क्योंकि ये आपके बुक में 1985 तक की बात हो रही है, तो उस टाइम तक 88 स्टैंडर्ड्स में आए थे, चेंज हुए थे, इशूड इन 2000। देखो, द एफएएसबी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन, FASB codification is the sole source of authoritative GAAP other than SEC issued rules and regulation that apply only to SEC register। मतलब जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, जो जैसे हमारे यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड कंपनी होती है, वैसे यूएसए में यहाँ पर है, यूएसए की बात हो रही है, तो वहाँ पे ही एप्लीकेबल है SEC, वैसे सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन। The FASB issues an accounting standards update to communicate changes to the FASB codification, including changes to non-authoritative SEC content. ASUs are not authoritative standard. Each ASU explain how the FASB has changed US GAAP, including each specific amendment to the FASB codification. ठीक है, ये मतलब FASB के बारे में बता रहे हैं, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपडेट, जैसे लेटेस्ट अपडेट है इशूड इन 2020 में जो है अपडेट 20, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज, टॉपिक 958। ये सब स्टैंडर्ड जो टाइम टू टाइम अपडेट हुआ है, जैसे ये जुलाई में एक अपडेट है, लोग देखते हैं तो पता चल जाएगा। देख लेते हैं किस तरीके का होता है, मतलब ये तो वहां का है, इंडिया का नहीं है, वो वहां के गैप है, वो बता रहा है, यूज करना सही नहीं है। मोटा मोटी समझ में आ गया एफएएसबी के बारे में डिटेल्स में कि एफएएसबी क्या है। यहाँ पे टिल 85 दिया है, लेकिन इसके बाद 2020 में भी अभी रिसेंटली बहुत अपडेट है, तो आप समझ सकते हो बहुत अपडेट, ठीक है ना, क्योंकि एफएएसबी यूएस का गैप को फॉलो करता है, वहां के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है, तो अकॉर्डिंग टू द एक्सचेंज कमीशन, वहां का जो एक्सचेंज कमीशन है वो जिस तरीके से गाइडलाइंस बता रहा है कि हमें ऐसे ऐसे चाहिए, तो फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, बोर्ड विल प्रिपेयर द गाइडलाइन और सेट द गाइडलाइन अकॉर्डिंगली। मुझे जैसे चाहिए मैं वैसे बोर्ड को बोलूंगी ना, और बोर्ड अकॉर्डिंगली नियम बनाएगा, ठीक है। Okay. Standards at international level. In view of the growth of international trade and multinational enterprises, the need for standardization at international level was felt. An international congress of accountants was organized in Sydney, Australia in 1972 to ensure the desired level of uniformity in accounting practice. Keeping this in view, International Accounting Standard Committee was formed and was entrusted with the responsibility of formulating international standards. तो ये क्लियर है कि क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड डेवलप हो रहे हैं, नाउ वी ऑल नो देयर इज अ ग्लोबल विलेज कॉन्सेप्ट, हम लोग कहीं से भी बैठ के कहीं पर भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, बाय सेल। मैं यहाँ पे बैठे बैठे आसानी से अमेज़न में ऑनलाइन सेल कर सकती हूँ, आसानी से बाय कर सकती हूँ, तो transactions buy and sell process can be done from any part of the world, right? तो इसके लिए क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं, तो सेम इंटरनेशनल कैपिटल एक्सचेंज भी हो रहा है, हमें पता है इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेन एक्सचेंजेस डेवलप हुआ है, फॉरेन कैपिटल मार्केट इज देयर, तो कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को, लाइक यूरो बॉन्ड है, मतलब बहुत सारे याकी बॉन्ड है, ऐसे बहुत सारे बॉन्ड्स है, या कैपिटल मार्केट में कंपनीज अपने शेयर्स इशू करती है इन ऑर्डर टू raise capital from the international capital market. So इस केस में क्या, there has to be an international standard. So keeping this in view, International Accounting Standard Committee was formed. तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए International Accounting Standard Committee को फॉर्मेशन की गई and was entrusted with the responsibility of formulating international standards. All the member countries of IASC resolved to conform to the standard developed by the IASC, or at least to disclose the variation from recommended standards. देखो IASC में, जैसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी में, दिस इज आल्सो अ बॉडी फॉर्म बाय वेरियस कंट्री, बहुत सारे कंट्रीज के मेंबर्स हैं उसमें, जैसे WHO एक बॉडी, उसमें बहुत सारे कंट्रीज के मेंबर्स हैं, सेम वे IASC के जो बॉडी है, वो जो कमिटी है, उसमें भी बहुत सारे मेंबर्स इन्वॉल्व, तो वो सारे, उनका मतलब एक ये हो गया कि एक सिंगल जो प्रैक्टिस बन रही है, वो सबको सारी कंट्री वो नियम को अपने कंट्री में फॉलो करेंगे। अगर नहीं भी फॉलो करते, देन इन दैट केस
दे शुड कंफर्म कि भाई हमारा डेविएशन कहाँ है। अगर आपके नियम है ए बी सी, तो मेरे पास ए और बी है, सी नहीं है, सी की जगह मैं एक्स यूज करूँ, तो दिस हैज टू बी डिफाइंड कि डेविएशन कहाँ पर है। इफ आई एम अ मेंबर कंट्री इन IASC, then either I have to follow the ISC guideline, I have to confirm my country guidelines for accounting practices should be according to ISC. If not, then I have to explicitly mention the deviation. ठीक है? The ISC has issued 40 international accounting statements to date. Another professional body, the International Federation of Accountants, was established in 1978. देखो ये जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, लाइक अभी तक जो जो हमने बॉडीज पढ़ी, FASB, फिर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी IASC, इसके बाद आगे आपका इंटरनेशनल फेडरेशन एंड अकाउंट, जितनी भी बॉडीज हम पढ़ रहे हैं, ये सारी बॉडीज के बहुत सारे अपडेट्स हैं। तो लेटेस्ट अपडेट में कुछ देखकर डिटेल्स देखकर बता दूं, क्योंकि ये तो बहुत पुराना अपडेट बता रहा है, इसके बाद बहुत अपडेट हुआ है। Attempts have also been made in countries of European Economic Committee and Canada for standardization of accounting practices regarding disclosure and consistency of